Hi, I am Geeta Kapur and you're watching me on Dance with Pari on Radio Nasha. Thank you so much for actually taking out time. Thank you so much for considering me one of the icons and one of the people who need to do this with you. I'm very honored. Thank you for calling. Of course, absolutely. This is divided into 3 parts, of course. Okay. जैसे एक डांस रूटीन होती है हम पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। ओह अच्छा वैसे अच्छा ठीक है वार्म अप कर लेते हैं। Not ask you to get up. Warm up is just getting started. मुझे पता है मैम आपने as much as I've done my own research, हाँ आपने मॉडलिंग से शुरुआत की थी। Oh no, हाँ। And then you also did ramp walk, you also did few ads. Is that right? Am I right? Things not to be memorable. I mean things are not memorable like that for me. Yes वो किया है लेकिन वो ऐसी चीज़ें नहीं है जो मुझे याद रखती है। Oh क्यों? ऐसे मतलब that wasn't the career path that I was looking for. And करना कुछ और चाह रही थी लेकिन हम कर रहे थे वो क्योंकि अब उससे बन रहे थे पैसे घर चल रहा था तो you started you get diverted into that. So then you started working with Farah ma'am of course. जी तो वो कैसे हुआ था? How did you get in touch with her? मैं उनको बहुत साल पहले मिली थी हम एक शो कर रहे थे and I think everybody knows the story now that I had replaced a dancer who was unwell and later on got to know कि it was her and of course she offered me a place in her group and she said मैं एक group ready कर रही हूँ I am going to do a tour और मुझे उस group के लिए एक लड़की की ज़रूरत है तो so that's how I got in touch with her. तो basically एक dancer के तौर पे गई थी वहाँ पे. So I met her as a friend, became a dancer. Then she became my mentor and my mother. I started calling her mom because I was the youngest member of that group. I was like I think 15 or 16 years old or something like that. But then never looked back from there. मतलब फिर dancer से then मुझे choreography के लिए एक offer आई. तो मैंने उनको पूछा मैंने कहा कि मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है कि मैं कोरियोग्राफर बनूं मुझे तो आता ही नहीं कुछ तो शी सेड अगर ये मौका मिल रहा है नेवर लेट एन अपॉर्चुनिटी गो बिकॉज यू नेवर नो वेयर इट लीड्स तो मुझे लगा कि मैं डांसिंग वांसिंग करके थोड़ा जो पैसे आ रहा है वो जब तक वो सिचुएशन है उसको संभाल के देन आई गो बैक टू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू बट देन वन थिंग लेड टू द अदर देन कोरियोग्राफर देन फ्रॉम कोरियोग्राफर यू स्टार्ट फीलिंग स्टैग्नेटेड एट वन पॉइंट एंड so I wanted to do something more. I wanted to earn a little more money. So then I was like, called her back and I said, so no. Yeah. I said, it's time for me to kind of do something else or move on. And she said, लेकिन अब situation ऐसा है कि and of course people keep evolving over time. आप शायद एक जगह पे रह जाते हो दूसरे लोग आगे बढ़ते जाते हैं. I couldn't go back to being a dancer. So she said, लेकिन अगर आप assistant बनना चाहते हो, and I was already a choreographer then. So I have one spot open for like I need somebody to kind of. फिर जो मैंने वहाँ पे जाके उनका पल्ला ऐसे पकड़ लिया, वो आज तक नहीं छोड़ा है मैंने. So ये एक चीज़ होती है ना, and this is also that अभी तो obviously people have started seeing dance in a certain light, okay? Correct. उस टाइम पर पहले एक अलग ही नज़रिए से डांसिंग को कोरियोग्राफी को देखा जाता था. जी बिल्कुल. लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं डांस करती थी माई पेरेंट्स हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव. मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे हर डांस शो में आते थे, ऐसे सामने बैठकर मुझे परफॉर्म करते देखते थे. बट आई ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट दैट यू नो आस पास के जो लोग हैं ना वो कहते थे पापा मम्मी से कि क्या करना है, क्या कर लेगी डांस करके, क्या कर लेगी. जनरल माइंडसेट था वो. हाँ. डिड यू ऑल्सो हैव टू फेस दिस? All the time, and I think it happens in every field when people don't understand your field of work or your craft. Everyone has an opinion, and they are very much entitled to do that. So I feel कि वो हर फील्ड में होता है, खास करके हमारे फील्ड में क्योंकि उसमें इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं थी तब, खास करके इस देश में. बट आई एम ग्लैड कि 2008 में एक शो आया जिस पे मैं रेमो और टेरेंस बैठे. And it changed the outlook of many people. And आज लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा कोरियोग्राफर बनना चाहता है, मेरा बच्चा आके आपके रियलिटी शो में परफॉर्म करना चाहता है या इसको अपना करियर बनाना चाहता है. And it sounds so good to hear it as a career option. Yes. Which it wasn't then. But situations ऐसी होती है ना लाइफ में कि लोगों के ओपिनियंस कभी कभी मैटर नहीं करती.
And I think that's the way to go about it. Always think, because it doesn't matter what they say. अगर ये काम से आपका घर चलता है, अगर इस काम से आपके लोगों के मतलब जो घर में लोग हैं अगर उनका पेट पलता है, do that job. It's got and do it to the fullest. फिर ऊपर वाला मालिक फिर देखेंगे क्या होगा. Dance show, talking about dance show, it's of course Dance India Dance. And oh my God, I remember how I used to watch it. मतलब वो हमारा फैमिली टाइम हुआ करता था. आपके लिए उस शो के बाद लाइफ कैसे बदली मैम? बहुत तरीक़ों से बदली एक्चुअली, क्योंकि एक तो मैं अनपढ़ और गवार कोरियोग्राफर थी when I went on Dance India Dance. And that's the fact, because all your experiences in life and all the dancing and all the movies and everything that I did was only a padding to who I was, which was a choreographer without a face. But once that show happened, it changed my way of thinking. It changed, मेरा भी नज़रिया बदल गया. मुझे भी घर जाके होमवर्क करना पड़ा. I also needed to learn, because अगर आप सीजन 1 से लेके 3 तक हमारी जर्नी देखेंगे तो you will also see how choreographers evolved, the 3 of us. We did not know, and I especially did not know anything. मैं पहला सीजन तो मुझे सीखने में गया कि क्या करना चाहिए जिससे आपका काम और आपका कंटेस्टेंट अच्छा लगे. By the time I understood it, the season was over. And by the time season 2 happened, I was like, and I was still learning. Yeah. Then I understood it's competition. But season 1, I was like one bhondu amongst these two. मैं थोड़ा सा आपको और से बैक ट्रैक करती हूँ और थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ. तो दैट सॉन्ग तुझे याद न मेरी आई, बहुत टाइम बाद मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था दैट उसमें एक्चुअली वो आप थे. एंड ऐसा आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ हुआ होगा. Thank God. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब वो अच्छा वो करते वक्त कभी कभी आपको पता नहीं चलता है वो कितना पिवटल पॉइंट है यू नो पिक्चर में या मूवी में. या एक्चुअली इट वाज टू बी डन बाय समबडी एल्स एंड देन शी वाज लाइक इट वाज अ वेरी लास्ट मिनट डिसीजन. मुझे लगता है मेरा ऑडिशन भी किया गया था उस गाने के लिए जो मुझे नहीं पता चला, बिकॉज वी वर डूइंग अ सॉन्ग कॉल्ड साजन जी घर आए. तो वन डे आउट ऑफ द ब्लू I was asked to go up, wear a costume, which was very natural. हमारे में होता रहता है कि एक काम कर तू कॉस्ट्यूम पहन के आ जा, वहाँ पे एक जगह खाली है वहाँ पे खड़ी हो. तो I went and stood and I danced, and then later on I got to know probably they were checking, because तब भी मेकअप हेयर कॉस्ट्यूम पहन के पीछे सीढ़ियों पे खड़े रह के हम साजन जी घर आए थे कर रहे थे. Today also when I see that frame and I'm like मैं दिख ही नहीं रही हूँ. और मुझे पता है मैंने कौन सा कपड़ा पहना है, but I know I'm standing there and I think वो मेरा audition था to do this, because 2 days later I was just told कल हम शूट कर रहे हैं, ये गाना कर रहे हैं, be ready and you are doing it. So I was like okay, 4 डांसरों के बीच में मैं अकेले, मुझे नहीं पता था कि मैं सोलो टाइम. माय गॉड. अगर मुझे पता होता तो क्या आप डिफरेंटली करते हो? Probably. Yeah, probably. I mean, but sometimes it's just good. I think उतना जब एक्चुअली अभी सोच के क्या फ़ायदा, तब जितना आता था उतना ही किया. तो एक और गाना, of course this also happened when you know DID came and Geeta Kapur, suddenly people started recognizing कि कौन है ये, कहाँ से आई है, क्या करती थी पहले. तो फिर लोगों ने वापस बैक ट्रैक किया और एक गाने में वापस आप दिखे, which was गोरी गोरी. हे भगवान. And I still remember that. सबसे पहले तो वो किया कैसे आपने? वो मैं ऐसे ही टाइम पास करती थी सेट्स पे, क्योंकि बहुत गर्मी हुआ करती थी. एंड ऑन एवरी सेट व्हेन आई यूज्ड टू गो आई यूज्ड टू लाइक टाई दोस 2 चोटीज, एंड व्हेन देयर वाज नथिंग टू डू सेट की आप शॉर्ट्स के बीच में इंतजार करते हो, तो ऐसा एक दिन मैं ऐसे ही कर रही थी तो एक ही घूमी. तो बोला अरे वाह मैं टैलेंटेड हूँ. फिर मैंने कोशिश करते हुए दूसरी वाली घूमेगी क्या, जब मैंने कुछ किया तो फिर वो दूसरा वाला भी घूमा. बोला अरे ये तो और भी हुआ, आई एम सो मल्टी टैलेंटेड. वन चोटी वाज गोइंग वन डायरेक्शन, सो दैट एंड आई वाज सिटिंग एंड देन इट बिकेम लाइक अ रूटीन. ऐसे बैठे बैठे आई वुड कीप डूइंग दैट. देन शी इज लाइक व्हाई डोंट यू डू दिस इन द सॉन्ग. लाइक वाओ, देन गो वेयर कॉस्ट्यूम एंड कम. वही जो हमेशा होता है. एंड मैंने कितना ट्राई किया वो हुआ ही नहीं. बहुत ईजी है. हाँ बहुत ईजी है. आप उसको लेकिन यहाँ पे बांधोगे ना टाइट टू बांधना पड़ता. तब बाल भी थे लंबे भी थे और चोटी भी बनती थी. अब आजकल चोटी यहाँ पे खत्म हो जाती है. Oh my God, but what a journey, ma'am. What a journey. It's been a wonderful journey. It's been a fruitful journey. It's been a great learning experience. Yeah,
This is my last question before we move to the next segment. बड़ा लंबा warm up है हम इतना बवास नहीं करें हमारे स्टूडियो में. Since when did people start calling you माँ? आपको वो कोई एक particular moment या incident याद है या होता ही गया बस? It started long time back actually. एक dancer थे जिनका नाम फिरोज था, and when I was a choreographer he was dancing with us, and he turned on and like, I can't call you by your name, but I'll just like, so with love ऐसा एक माँ. Then when I formed a team, it was a team that was headed by two South Indian boy and girl, brother and sister. And the sister turned and said, I can't call you by your name. I call you Geeta Ma. Like वो जैसे माँ बोलते हैं कि नमा, how are you माँ, like that. तो वो गीता माँ ऐसे प्यार से बोलती थी क्योंकि उनको मेरा पूरा नाम नहीं लेना. And now that has been, so it just kept on and then it became a joke one day on set के इसके सारे बच्चे इसको गीता माँ बोलते हैं, जो जय ने शुरू किया. And I had no idea that it would catch on to a point where now every age group, any age group is addressing me like that, and it makes me feel very humble but very responsible because that one thing is attached to my name now. It's become my surname. In fact मैंने टेरेंस सर को कितनी बार सुना है आपको गीता माँ बोलते हुए? वो तो थप्पड़ ही खाएगा. ऐसा बात में Okay. All right. So अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले segment की तरफ, which is the routine or the choreography. Made in India. Oh my God, this my song जो हमने रेडियो नशा पर हम इतना ज़्यादा प्ले करते हैं, like we like literally own this song, right? Of course, yes. But today I want to talk. Generally जब हम इस गाने की बात करते हैं, किसने गाया है, who has composed the song, you know, who has featured in the song. But today I am going to talk about the choreography of the song because it has been choreographed by the one and only Geeta. That I basically went on set not knowing that the song was called Made in India. I thought it was Made in India, so and that's how it was choreographed also. Okay, Made in India. But I had a very sweet boss then. His name was Ken Ghosh, and he was adorable, and he loved the hook step. He loved the whole choreography of it, and honestly वो इसलिए था क्योंकि हमारे पास great sound system तब था नहीं. मेरे ब्यूटीफुल गरीबी के दिन में एक छोटा सा वॉकमैन हुआ करता था जिसको मैं ऐसे लगा के आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ द एंटायर सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ माय कबर्ड का मिरर. तो मैंने पूरा मेड इन इंडिया उस वक्त वैसे कोरियोग्राफ किया था. देन आई वेंट एंड कोरियोग्राफ लाइक टॉट इट ऑल टू द डांसर्स ऑन सेट. And set पे it's so different. It is very different. It's big because you know the number of people you're using. And when I went on set, तब मैंने देखा एक खोके पे ऐसा मेड इन इंडिया लिखा होता. तब मुझे जाके बोला ओह ये मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन इंडिया है. Not knowing that song will be a turning point in my video choreography career. It did. Yeah. तो but that was not my first video. Oh, that was not. That was my third video in my career. Wow. तो उससे पहले मैं दो ऑलरेडी कर चुकी थी. अब मेरा सबसे पहले म्यूजिक वीडियो विद Ken was Suchitra Krishnamurthy's Dole Dole, in which I was dancing and I was choreographing. Okay. Then I did her other song which was Dum Tara and then went off to it. तो अगर मैं आपसे कहूँ 3 songs if you had to pick, I know बहुत सारे गाने हैं, but 3 songs if you had to pick, जिसको आपने या तो individually choreograph किया है या फिर you know being with Farah ma'am choreograph किया है, 3 songs that you're really proud of, you know, of the choreography. Oh, I'm not proud of some of them, but I can tell you 3 songs that completely probably changed my life. Yeah. One was the opportunity to work in become a choreographer, which was Dole Dole for me, because nobody actually gave me that opportunity and no one saw that spark, so to say. And I think Ken Ghosh tapped into that. So I want to thank him for actually seeing me as a choreographer. तो अगर choreographer बनने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो उनको और उस गाने को. Because I learned a lot from there. Moving further down the line, I think for my boss to give me the leeway and saying go choreograph this song क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी, and I did a song called रोशनी से भरे भरे for the film Asoka. I think that
Oof, what a song. I had what I learned from that song I have used and utilized over and over and over. आज जब मैं reverse गाने देखती हूँ, आज जब मैं and you need a boss to give you that opportunity. You need your superiors to turn around and have that faith in you and say, कर ले. you know, कर ले और ये तो कर सकती है या कर सकते हो. वो बहुत ज़रूरी होता है. And I think it's very rare to find bosses like that. The last song, which I would say also I have a lot of affection for, is Sheila Ki Jawani, because to choreograph a song in your boss's film, to choreograph a song under her nose and under her guidance and get credit as a choreographer, I think I was blessed. And what a choreography. मतलब, I still can't get this right. Even I can't get it right at times. But एक गाना, if I may just tell you, ma'am, Lazy Lamhe bhi is your right. Lazy Lamhe मेरा पहला stage lead performance था. Really? Yes. Wow. So I was in a dance institute and बचपन से ही मुझे singing और dancing में बहुत शौक है. Okay. Yes, Anjali. So I performed on Lazy Lamhe. It was my first lead. मतलब center में सारी spotlight मुझ पर है. Oh my God, I can't tell you the confidence that song gave me. And it's just been done so differently. You know, the choreography. It looks very, very charming and very sexy. I owe that to, you know, the ad filmmaker in Kunal. I also owe that to Amisha being Amisha. Oh my God. She was like, she just, you know, when an artist trusts you, it's very different. Yeah. Like for her and for Seth to kind of trust you and say, कि जो करना है कर लेंगे. Let us like see whatever. And then to trust the animation team to come there and do all that stuff. To trust your underwater team to shoot it like that. Yeah. And you know, मुझे हमेशा लगता है कि बगैर टीम के ना कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है. हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल. So great team made that song. और मैं शॉक्ड थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं. उन दिनों में वो सब था नहीं कि आपको एक झलकी दिखे. एंड यू नो, सो वी वर शूटिंग इट विथ अ स्टोरी बोर्ड इन माइंड एंड ऑन पेपर कि ये फ्रेम में ये होगा, ये एनिमेट होगा. वो जब तक एनिमेशन हुआ नहीं तब तक मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने क्या शूट किया है, इसका क्या परिणाम होगा. बट इट टर्न्ड आउट वेरी नाइस एंड आई वांट टू थैंक दैट एंटायर टीम. But thank you so much, Geeta ma'am, for these wonderful choreographies. I love you. Thank you for Lazy Lamhe. I just that was the moment of my life. Thank you for appreciating it. And the last segment is called the cool down. Which I need right now. So ये कुछ quick questions है, Okay. rapid fire, जिसमें Okay. आपको इन questions के cool answers देंगे. यहाँ पे मैं मार खा जाऊंगी, बट हाँ ठीक है. मैं कुछ तो ऐसा गड़बड़ रबिश तो बोल ही जाऊंगी जो मेरी आदत है. अच्छा ठीक है. Okay. भगवान. पहला सवाल. जी. An actor who has been the most fun to choreograph. I think at one given point in time, Mr. Shah Rukh Khan, because he also knows, and his energy is great. But actually, in recent times, because I worked with Mr. Khan long time back, in recent times, the most fun actor to choreograph Ranveer Singh. Oh, energy and the Just fun. yeah. मतलब मुझे लगता है फन में मज़ा जब आता है तो फिर काम आसान हो जाता है. बिल्कुल. बहुत लंबा नहीं था ये रैपिड फायर. कोई नहीं. And सबसे difficult to choreograph. Any actress who doesn't want to dance is the most difficult to choreograph, क्योंकि उनको डांस नंबर करना है as per requirement. वो डिफिकल्ट हो जाता है. सबसे easy to choreograph. Like फट picks up like this. सबसे इजी, बाप रे कितनी है हमारी इंडस्ट्री में, खास करके गर्ल्स. ऑफ कोर्स रणवीर बीइंग द क्विकेस्ट टू पिक अप ऑन स्टेप्स, बट द इजीएस्ट माधुरी जी है. देयर इज ऐश्वर्या, देयर इज प्रियंका. पीसी इज द फास्टेस्ट टू लर्न, बट टू परफेक्ट शी टेक्स टाइम. या रानी मुखर्जी, ब्रिलियंट. एक इंसान है जो बैठ के कोरियोग्राफी सीखती है, वो रेखा जी है. ओह, she can sit and she will learn choreography. That's the fastest. Wow, I thought इनमें ऋतिका नाम आएगा.
No, not the fastest. He will not learn fast, although he can. He will not learn fast. Achha. He will take his time. He will learn everything, perfect it to T. He doesn't like to rush through anything. Yeah. He will take his time, and which is sometimes also a great thing because you get to see your work look like brilliant. Oh, Ritik. And my God. An actor you wish to work with? Someone I really wish I could have choreographed. But I don't know if I'll ever get that opportunity. I mean, of course, I've got a chance to work with that person, but I wanted to kind of choreograph this artist, Helen G. Oh my God. Oof. I think, she doesn't need choreography. She never would need. We've learned so much from her. And I think she is one of the finest dancers this industry has ever given us. Yeah. Free-spirited, free-flowing, fluid, beautiful expressions, character, style. She was that complete package of a dancer. वो उनके साथ मुझे मतलब वो रह गई मेरी इच्छा, but I performed in front of her, so I'm Never say never, ma'am. क्या ही पता, लेकिन हाँ मतलब I would have wanted to be in her time and her prime to kind of choreograph. वो मेरी इच्छा रह जाएगी, बाकी मुझे कोई रिग्रेट नहीं किसी के साथ काम करने की, कोई इच्छा नहीं उनके साथ. The weirdest place you've choreographed in? It was a corner in famous studios outside. We were doing an ice act. एंड बर्फ़ की सिल्ली हम स्टूडियो के अंदर नहीं ले आए, तो मतलब ले आ पा रहे थे और वो टाइम लग रहा था उठा के अंदर लेके जाने के लिए. हम एक एक्ट कर रहे थे DID के लिए, तो वो बर्फ़ की सिल्ली हम उस फेमस स्टूडियो के बाहर गली में हमने रखे, वहाँ पे कोरियोग्राफ किया था. सो दैट वाज वियर्ड. वहीं पे मेल्ट हो रहा था, वहीं पे सब कुछ हो रहा था. एटलीस्ट हम ये सोच के गए थे प्लान करके कि स्टूडियो AC बर्फ रह जाएगी एंड व्हाटएवर, बट ऐसे प्लान कि नहीं एंड फिर अलग अलग थॉट्स में आता है. दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर अस टू कोरियोग्राफ एंड डू दैट ओवर देयर. If one day you woke up as Terence sir, what would you do? I'd get to studio on time and do my hair faster and get ready before the ladies. Terence sir, he leaves his house after we reach the set. So yeah. गीता मैम को किस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मुझे किसी भी चीज़ से एक्चुअली डर नहीं लगता. What I'm afraid of is to hurt somebody. That's the only thing I'm afraid of. कि मतलब मैं किसी का दिल नहीं दुखा. हालांकि हम रोज़ करते हैं ये, हम रोज़ किसी ना किसी का दिल किसी ना किसी तरह से दुखाते हैं. But that is the one thing I am afraid of. कि when I go from this world, people should think of me as like somebody who never hurt them. If not a choreographer, then what? I would have been an air hostess. Oh my God. That's what I wanted to do. Wow. Wow. Life. आप प्लान कुछ और करते हो? खुदा कुछ वही था, वही करना था, लेकिन यार I would have either been an air hostess or I would have been like a wanderer, traveling wanderer. But yeah. Weirdest thing you've read about yourself internet पर? That I am married and I have children and I own like a really big bungalow in Goa, and which none of them are true. I have a godchild. That's where my children, of course, I have some 3,000 odd children in this world. Yeah. Somewhere around. Or maybe more also. More. हज़ारों में होंगे बच्चे, लेकिन मेरे खुद के अपने बच्चे नहीं हैं. But apparently I have hidden children somewhere and I have a hidden husband also somewhere. Which is wow, I mean, right here. Yeah, मेरा कोई बंगला भी है, मैंने सुना है. वो बंगले की चाबी अगर किसी को मिल जाए मुझे दे दीजिए. उसमें मैं रहना चाहूँगी कभी. What would you like to say to the social media trolls? To each their own. Your opinions are your own and they don't need to apply to me. God bless you all. Find something better to do with your time. Because your opinions really don't matter. And the last question, what would you like to say to your younger self? I want to tell my younger self, good job. Wow. Can I also? Yes, right here. Good job. Because I think just सिचुएशन और जिस हालात में मैं पली बड़ी हूँ, अगर मैं वहाँ से यहाँ तक आई, तो आई थिंक माई यंगर सेल्फ डिड अ वेरी गुड जॉब. ऑन बिहाफ ऑफ Terence, me and Remo, I just want to say thank you to everybody who has loved us for making us who we are in the industry of dance today. I want to thank every dancer because without you all, our choreography would have never looked the way it is. I want to thank every choreographer
for giving us inspirational songs to work around. Every choreographer all over the world. I want to thank every person who believed that they needed a song in their film or in their musical or on stage and gave choreographers an opportunity to show that talent. And above all, the team and like the people who create our songs to look the way they are, like from the lighting department to the gaffers, to the spot boys, to the unit members, when we are yelling and screaming, and the costume departments and every department that makes our work look good and makes us the choreographers who can celebrate International Dance Day. I want to say thank you to everybody, because I think this is a बहुत अच्छा platform है for me to say thank you to every department that works with us. So thank you so much. Before I end this, Geeta ma'am, I just have to say thank you so much for making dreaming look believable. I hope I can continue doing that work. Hearing you say that makes me feel like good self. Thank you so much. Time for me. God bless you. And आप परी की तरह हमेशा उड़ती रहें. I have to Reach new heights and whatever you do. God bless. Thank you. Thank you. Radio Nasha.